So shall we start now? See, this is the syllabus of indirect taxation. It consists of 5 units. So in first unit, we were discussing in the last lecture, before 2 weeks back, I think we were discussing about this first unit, that is the introduction of indirect taxation. So in which I think we had discussed about what is meant by customs, excise duty, VAT and GST concepts. Then I think we had discussed about the needs and need or the importance of GST. Now we have to study about the dual GST model, CGST, what is meant by SGST, what is the UTGST, IGST, GST network, GST council, and what are the various phases in GST council, and what are the constitutional provisions to enforce the indirect taxes and GST, and we have to see about the cess. So this is something about the syllabus of first unit. So in the last lecture we had seen what is the tax, then we had seen about the what are the objectives of collecting the taxes by the constitution. So in the last lecture we had seen that this is the right given by our constitution for constitution to central and state government to collect the tax from the country. Okay, so that there are two sources of tax, the government sources of revenue in the form of tax, that is the direct taxes and indirect taxes that we had seen. In case of direct taxes, the burden of tax will be not shifted towards somebody else. That was something about direct tax. Indirect taxes, whatever tax as a manufacturer or as a supplier or as a wholesaler or as a dealer or as a retailer, whatever tax I will be paying towards the government, the same amount of tax I will shift towards the end user. This indirectly consumer or customer is paying the tax. That is something about indirect taxes. Then we had seen about the objectives of taxes, why government collect the tax from an individual, and why as an individual, as a firm, as an assessee, why pay tax to the government. किसी का mic on है, please off कीजिए. Okay, so the objectives of taxes, which that also we had seen in the last lecture. Then canon of taxation. So in canon of taxation, we had seen about canon of equality, canon of certainty, canon of convenience, and canon of economy that we had seen in the last lecture. Okay, then after that we had seen the classification of taxes, that is direct taxes and indirect taxes. Direct tax consists of income tax, wealth tax, as well as gift tax. Then indirect tax consists of excise duty, custom duty, service tax, and sales tax or VAT. Now all these taxes we have clubbed together and we have given the name, that is the GST, that is goods and service taxes. Now excise duty means what? Excise duty is the one of the type of indirect taxes. So if we are going to manufacture any goods, at that time the duty or the tax which is paid on the manufacturing of the goods, that is called as a excise duty, and this excise duty goes to the central government. After that we had seen about the custom duty. Custom duty is means what? Whenever you are going to import some goods and services from outside country, that time along with your some of the taxes you have to pay this custom duty. Whenever you are going to pay, whenever you are going to export goods and services outside country, or whenever you are going to import the goods and services, at that time whatever is the duty you have to pay, that is something about custom duty. The custom duty will be in the form of import duty or export duty. Then second is the service tax. Means what? If you are not manufacturing goods but you are selling your services, at that time whatever sale, whatever amount of sales tax which we have to pay, that goes to the service tax. And last is the sales tax or VAT. Now in case of manufacturing of goods, when you are selling your finished products to outside state, means what? From you are selling the finished products from Mumbai to Gujarat,
at that time to Surat. At that time, Surat is in Gujarat and Mumbai is in Maharashtra. Means what here? From one state, Maharashtra, to you are selling or you are sending goods to the Gujarat. At that time, you have to pay sales tax that goes to the central government. Getting this? That is called as a central sales tax. And for example, if you are selling material from Mumbai to Nagpur, so both the destinations are within one state in the Maharashtra. At that time, you have to pay VAT, that is called as a value added tax. So due to the entry of goods and service tax, that is the GST, all the tax, whichever are here, all these tax are clubbed under GST. When GST has came into force, came into force at that time, 17 taxes has been clubbed under one GST. तो पहले क्या थे ये? These are the various taxes and various formalities which we have to, as a manufacturer or as a service provider, we have to follow this kind of various duties. Now all approximately 17 kind of taxes our central government as well as some of the state government they were collecting from the individual. तो ये 17 टैक्सेस क्लब किया है और उसको क्या नाम दिया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया है. Now just try to understand all these which you are just observing here: excise duty, custom duty, service tax, VAT, then your other taxes. These were the part of the indirect taxes. Getting this? और हर एक के लिए रूल्स अलग थे, हर एक के लिए प्रोसेस अलग थी, रिटर्न कैसे फाइल करना हर एक का अलग अलग था. So that there was the lots of confusion in the mind of supplier, distributor, manufacturer as well as service provider. Getting this? Now तो हम लोगों ने क्या किया? Due to the entry of GST, we have relaxed all this. We have broken down. So we have brought this all under the umbrella of GST. Okay, so that we had seen in the last lecture. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल देखे थे. Then we had seen the distinguish between direct tax as well as indirect taxes. That also we had seen. Now after that, we had seen about some of the examples how the tax burden is going to shift it towards the manufacturer to the consumer. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स बर्डन कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर to the end user or to the consumer. How you are going to shift that burden, that we had seen in the indirect taxes. So indirectly, who is paying tax? Consumer is going to pay the tax. At every stage, tax burden will be shifted to the next stage. And whatever tax is already paid at the earlier stage, the next stage person will get its a credit. That is called as a Sem-III credit. ये credit मिलता. So that was the tax system, earlier tax system. So just look at this existing indirect taxes before the GST. So we had central excise duty, additional excise duties, then excise duty under Medicinal and Toilet Preparation Act. Then we had additional duties of customs, service tax, surcharges, cess. So these were the some of the taxes that these were collected by the central government. तो जीएसटी के पहले ये जो आपको सेंट्रल टैक्सेस जो दिखते हैं ना, so these are the 5-6 taxes. These were collected by the central government. And look at the state taxes. Under state taxes, sales tax था, VAT था, central sales tax था, purchase tax था, entertainment tax था, luxurious tax, entry tax, taxes on lottery, betting, gambling, surcharges, and cess. So these are the varieties of taxes that was these were collected by the state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस कलेक्ट करते थे. हम लोगों ने क्या किया? सेंट्रल के टैक्सेस और स्टेट के टैक्सेस कंबाइन किए विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, एंड सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने क्या नाम दिया है? नाउ वी हैव ओनली जीएसटी, that is the goods and services tax. Now being
or due to the entry of this GST, now we have only single tax for one nation. Enter across the nation, we have only GST. So before entry of GST, value added tax for each and every state was different. Getting this? As well as rate of local taxes for each and every state were different. इसलिए हम लोगों ने क्या किया? Our objective is to have only single tax for single nation. पूरा कंट्री के लिए हम लोगों ने एक ही टैक्स बनाया है, उसको बोलते हैं जीएसटी. तो हम लोगों ने ये कस्टम ड्यूटी किसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स किसको बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी किसको बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने वैट कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. ठीक है, अभी हम लोग जीएसटी स्टार्ट करें. जीएसटी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है. नाउ all indirect taxes which were collected by central government and all indirect taxes which were collected by the state government, we have clubbed and we have brought all these kind of indirect taxes to be collected by the central government and to be collected by the state government. We brought under one umbrella, that is called as a GST. So our objective is we should have only single tax for one nation. So here rate of taxes, whatever are the rates of taxes, these rate of taxes will be decided by the central government irrespective of your taxes, irrespective of your states. So rates of taxes will be prepared, policies of these indirect taxes will be prepared at a central level, and all the respective states has to be follow this kind of taxes. Nowadays, due to the entry of this GST, rates of indirect taxes are not changing with respect to states. गुजरात में जीएसटी का रेट और महाराष्ट्र के जीएसटी का रेट उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, because rates are decided centrally, and all 33 states are following that GST rules and regulations. So GST is nothing but it is a indirect tax which is replaced by many indirect taxes. में जो existing taxes को क्या किया है, हम लोगों ने GST के फॉर्म में रिप्लेसमेंट किया. So Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. 2017 में क्या हुआ, Goods and Services Tax Act पास किया है. And pass करने के बाद क्या होता है, we will once we pass this in the lower house of the parliament as well as in the upper house of the parliament, then we will prepare its a draft, and that draft goes to the president for the signature or for the consent. Once we get the approval from the president, then it becomes finance act, and then it will be used, or then it will come into the force. So this act came into the force from 1st July 2017. अभी देखिए उसका प्रोसेस क्या होता है, मैं बताता हूँ. So whatever act we want to prepare, this act should be presented in Lok Sabha first. Once we get the approval from the parliament, members of the parliament, 2/3 member का उसमें permission होना चाहिए, approval होना चाहिए, consent होना चाहिए. Once the act is passed in the parliament and once we get the permission of the parliament by 2/3 members of existing members, 2/3 population existing members के 2/3 population से pass होना चाहिए. Once it is passed in the Lok Sabha, then it goes to the Rajya Sabha, to the upper house of the parliament. So again, whatever are the members, existing capacity, existing availability or existing present attendance of that parliament, उसमें से again 2/3 लेवल से 2/3 अटेंडेंस से वो क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए. Once it is passed in the Lok Sabha, then it will be passed into the Rajya Sabha, it will be presented into the Rajya Sabha. So whatever is the population of that assembly, out of this total population, 2/3 members should give the
acceptance. Then once we get the permission or once we get the approval from Lok Sabha and Rajya Sabha, then the draft will be kept for the president's signature. Okay, and when this president goes through this entire draft, and if he feel that this is beneficial for the country, this is beneficial for the common man, that time that president can make the signature. Once the draft get the signature, means what, president has given the approval for this draft, and once we get the approval, then it becomes finance act, and once it becomes finance act, that time it will be followed or it will be implemented within the country. तो ये सारा प्रोसेस होने के लिए इधर क्या हुआ, 29 मार्च 2017 को क्या हुआ, पार्लियामेंट में वो ड्राफ्ट पारित हुआ, उसका परमिशन 2/3 परमिशन मिलने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट का परमिशन मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीना क्या हुआ, 3 महीने तक वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में पड़ा हुआ. मीन्स व्हाट, देयर वर some of the discussions were going on, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन एप्लीकेबिलिटी. सो इसके ऊपर और फाइनली 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दिया इन्फोर्स करने के लिए. तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी. ओके, आपको कुछ पूछना है क्या जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में? अगर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अब हम लोग आगे वाली स्लाइड में जाए. डू यू वांट टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेरीज? You can ask, otherwise we will move to the next slide. Yes, students, have any doubt? You can ask me. Are you listening me? Yes or no? Yes, sir. So do you have any kind of doubt GST related, indirect tax related, direct tax related, या उसका establishment कैसा हुआ या कुछ? तो अगर कुछ डाउट है तो you can ask me, otherwise we will go to the next slide. No doubt, sir. Okay, तो GST, just try to understand the basic of GST. पहले जो हमारे पास टैक्स थे तो मल्टीपल टैक्सेस थे, तो मल्टीपल टैक्स को मैनेज करना गवर्नमेंट को भी इतना आसान नहीं था, और एज अ टैक्स पेयर हम लोगों को भी क्या था, उतना आसान नहीं, क्योंकि हर एक टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना डेट अलग था, उसके बाद उसका रिटर्न उसका टैक्स रिटर्न का अलग अलग डेट्स थे, तो उसके हिसाब से क्या था, पेनल्टी ज्यादा लगती. एंड देयर वाज द इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग. कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था कि टैक्स ऑन टैक्स था, यानी जो मैन्युफैक्चरर ने जो कुछ टैक्स पेमेंट किया रहेगा वही टैक्स, यानी फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज के ऊपर मैं टैक्स पेमेंट करता था, और वही फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट करने के बाद 110 रुपीज हो गया, तो 110 रुपीज के ऊपर अगर वो नेक्स्ट स्टेज को जाता है ना, तो 10 रुपीज इज द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो ये 10 रुपीज के ऊपर भी नेक्स्ट स्टेज को टैक्स लगता, जो कि नहीं लगना चाहिए था, उसको बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट. तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से क्या किया, कैस्केडिंग इफेक्ट तो जाता था, जो दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्स ऑन टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को जा रहा है, वो भी अगले स्टेज पे टैक्स कैलकुलेशन करते समय उसके ऊपर भी टैक्स लगता, इसलिए कंज्यूमर वाज unnecessarily getting highest tax burden. तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंगल टैक्स फॉर सिंगल नेशन इंप्लीमेंट किया, वन टैक्स फॉर एंटायर नेशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी. There will be no any kind of multiple tax authorities, multiple tax rates and multiple tax act should be not there. तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक ही टैक्स बनाया पूरे कंट्री के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द स्टेट्स. तो पर्सन में भी इन गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान,
or he may be from union territories like um, Jammu Kashmir, or for example Delhi, दीव, दमन, पौंडीचेरी, तो सबके लिए एक ही टैक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट। सो पहले क्या था, अर्लियर टैक्स सिस्टम में क्या था, स्टेट के टैक्सेस के रेट्स अलग अलग थे, स्टेट के टैक्सेस के रेट अलग अलग थे। तो इसलिए क्या होते थे, सो मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर they were deciding whether to go in Pashchim Bengal or whether to go in Gujarat, that manufacturer or that businessman was deciding। क्योंकि गुजरात में गए तो उनके स्टेट के टैक्सेस बहुत कम थे। अगर वही माल अगर हम लोगों ने महाराष्ट्र में पब्लिश किया, प्रोड्यूस किया, तो महाराष्ट्र के लोकल टैक्सेस कुछ अलग थे। वही माल अगर हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में मैन्युफैक्चर किया तो वहां पे टैक्सेस अलग थे। यानी स्टेट के हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्स। तो इसलिए क्या हो रहा था, जो एज अ बिजनेसमैन आई वाज थिंकिंग कि पश्चिम बंगाल में जाना है या गुजरात में जाना है या महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग करना है या कोई दूसरी कंट्री दूसरे स्टेट में पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर वाज थिंकिंग टू स्टार्ट दिस इट्स यूनिट्स इनटू वेरियस स्टेट्स वेयर द रेट ऑफ टैक्सेस आर लेस। तो अभी जीएसटी में क्या कर दिया, जीएसटी ने स्टेट वाइज कुछ टैक्स ही नहीं रखा। जीएसटी ने क्या किया, कोई भी स्टेट को ऐसा टैक्स कलेक्शन करने का, टैक्स का रेट डिसाइड करने का अथॉरिटी डिमोलिश किया है या निकाल दिया है। तो अभी चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर, चाहे गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करे या महाराष्ट्र में करे या उत्तराखंड में करे या दिल्ली में करे या दीव दमन या अंडमान निकोबार में करे, सबके लिए टैक्स रेट सेम ही है। अर्लियर क्या था, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा। टाटा का जब नैनो प्लांट पहले पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था। आपको पता है कि ये नैनो का पहला मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में हुआ। Then with respect to this tax and with respect to the classes between these companies, central government and state government, classes चालू हो गए। So due to this activity, what happened? This Tata has shifted this plant from that पश्चिम बंगाल स्टेट टू गुजरात। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चलो आप इधर आ जाइए, हम लोग आपको टैक्स में भी रिलीफ देंगे एंड वी विल प्रोवाइड यू बेटर एंड बेटर क्वालिटी सर्विसेज फॉर द इंडस्ट्री। तो क्या हुआ, जो पश्चिम बंगाल स्टेट था, वहां पे जो टाटा ने मैन्युफैक्चरिंग या कुछ प्लानिंग चल रहा था नैनो का, वो क्या किया, उधर से शिफ्ट किया कहाँ पे, गुजरात। क्योंकि टैक्स में कुछ रिलीफ मिलती थी लोकल टैक्सेस में। उसके बाद सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, जो कि उस टाइप का फेवरेबल गवर्नमेंट एंड टैक्स बर्डन पश्चिम बंगाल में उसको नहीं है। लेकिन जीएसटी लॉन्च करने के बाद क्या हुआ, नाउअडेज there is no any kind of control with respect to tax to any of the states. Entire authority of tax is going towards the central government. तो अभी क्या है, चाहे आपका प्रोडक्ट पंजाब में प्रोड्यूस करो या आपको गुजरात में प्रोड्यूस करो, राजस्थान में प्रोड्यूस करो या पश्चिम बंगाल में प्रोड्यूस करो या कोई भी अक्रॉस द कंट्री कोई भी स्टेट में प्रोड्यूस करो, आपको टैक्स लगने वाला जो रेट है वो सेम। इसलिए nowadays whether you can produce across the country, rate of tax is not going to change. This is the first benefit or this is the first advantage of this GST. आपको कोई भी ऐसा जानबूझ के एक्सेस टैक्स नहीं लेगा। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? तो दिस इज समथिंग अबाउट जीएसटी। अभी देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। एक्चुअली जीएसटी वाज स्टार्टेड इन द year 2000 when Congress government was in power. Sorry, Congress government 99 तक था। तो actually this concept of GST came into the Congress government and उसके बाद वही concept 2099 में कांग्रेस गवर्नमेंट गया और 2000 में क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। तो वही उनका कंसेप्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ट्राई किया। एंड वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड दे also
prepared one committee who will work on this GST law. तो GST लॉ एक्चुअली 2000 में, सन 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ? So 2004 में क्या हुआ? टास्क फोर्स कंक्लूड GST मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्रूव करंट टैक्स सिस्टम। तो 2000 से लेके 2004 तक उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि GST शुड बी इम्प्लीमेंटेड। देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस GST इंट्रोडक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 में। उसके बाद 2011, 10, सॉरी 2006 में हुआ। 2006 के बाद 7 के बाद 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बीच में क्या हुआ? फिर बीजेपी गवर्नमेंट गया, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, फिर कांग्रेस में गवर्नमेंट गया। देन in 2014 again बीजेपी गवर्नमेंट केम इनटू द पावर। उसके बाद फिर एक बार हम लोगों ने जीएसटी का उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। So in 2015 GST bill was passed in the Lok Sabha but not passed in the Rajya Sabha। तो क्या हुआ यहाँ पे? जीएसटी बिल एंटायर कंट्री के लिए कुछ भी रूल करना है, एंटायर कंट्री के लिए रूल करना है तो एटलीस्ट इट शुड बी पास्ड इन द बोथ द हाउसेस। लेकिन इफ वी सी ड्यूरिंग द ईयर 2014 some power was towards the कांग्रेस गवर्नमेंट, सम ऑफ द स्टेट, कुछ ऐसे स्टेट्स थे उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का पावर कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे उसमें बीजेपी गवर्नमेंट वाज इन पावर। along with this there were some of the other governments like जैसे कि अदर गवर्नमेंट यानी तृणमूल कांग्रेस था, उसके बाद लालू प्रसाद का कुछ गवर्नमेंट था, या ऐसे लोकल कुछ गवर्नमेंट स्टेट चला रहे थे। सो दैट व्हाट हैपेंड, लोकसभा में क्या हुआ? वो पब्लिश हो गया, लोकसभा में उसका परमिशन मिल गया, लेकिन राज्यसभा में उसको परमिशन नहीं मिली। मीन्स व्हाट? to publish this as an act we have to publish, we have to present in Lok Sabha as well as in Rajya Sabha, and once we get the permission from Lok Sabha as well as then from Rajya Sabha, then we can pass this towards the president for its permission। लेकिन 2015 में क्या हुआ? लोकसभा में हम लोगों ने पास किया, लेकिन राज्यसभा में उतना 2/3 पॉपुलेशन का परमिशन नहीं। ओके उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? जीएसटी आईएन यानी जीएसटी नेटवर्क बनाया है। जीएसटी नेटवर्क इज द नेटवर्क entire GST will be handled or organized through the software। अभी हम लोगों की कोई भी जीएसटी का कोई भी टैक्स पेमेंट करना रहेगा तो कोई भी हैंड रिटन फॉर्म भरने की जरूरी नहीं है, कोई भी मैनुअल सिस्टम जीएसटी में नहीं। एंटायर थिंग इज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को दिया है। ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन्फोसिस हैज चार्ज 1400 करोड़ रुपीस। इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हिच इज साइंड विद द इन्फोसिस कंपनी। और ये इन्फोसिस कंपनी को ये सारा सिस्टम बनाने के लिए कितना पैसा दिया है? 1400 करोड़ रुपीस। समझ में आ रहा है? So this is the GSTN. This is the GSTN, N for network. So this is the entire system which will run with the help of some of the software, and this software as presented by Infosys company, and they have charged 1400 crore rupees। Getting this? तो उसके बाद क्या हुआ? For supplementary 2017 में once again we have published in the Lok Sabha as well as Rajya Sabha। 2017 में हम लोगों ने क्या किया? राज्यसभा में भी पब्लिश किया, लोकसभा में भी पब्लिश किया। till that time it was not possible to us, it was 2014 में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 2014 में क्या था? हमारा बीजेपी गवर्नमेंट
लोग सेंट्रल पावर में था, लेकिन सिर्फ सेंट्रल का पावर लेके, सेंट्रल का अथॉरिटी लेके ये पब्लिश होने वाला एक्ट नहीं था, बिकॉज वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट्स। हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? कितने स्टेट्स हैं? यस, व्हाई यू पीपल आर नॉट टॉकिंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू और नॉट? जस्ट टेल मी। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। Yes, sir. हमारे, मैं क्या बोल रहा कि जीएसटी ये है सेंट्रल लेवल का टैक्स है, तो सेंट्रल लेवल का टैक्स इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मुझे हर एक स्टेट का भी परमिशन लगता था, जो कि वो स्टेट का, हर एक स्टेट का परमिशन मुझे 2014 में जब नरेंद्र मोदी पावर में आ गए तब मुझे नहीं मिला। गेटिंग दिस? व्हाई वी डोंट गेट द परमिशन? व्हाई डिडंट गेट द परमिशन? क्योंकि उसी के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट वाज पावर इन सेंट्रल। सेंट्रल में पावर बीजेपी गवर्नमेंट का था, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे इंडिया में उसमें कांग्रेस की पावर थी। कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि उसमें पावर में कांग्रेस गवर्नमेंट। इसलिए अगर कोई भी रूल बनाना है तो दिस टू इम्प्लीमेंट एज अ रूल वी हैव टू टेक द परमिशन और द अप्रूवल और द कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज। तो जो गवर्नमेंट में कांग्रेस पावर में थी उन्होंने अपोज कर दिया, वो बोल रहे कि हमको नहीं चाहिए। तो जब तक सारे स्टेट का अप्रूवल नहीं आता है, कितने स्टेट है हमारे इंडिया में? यस, So 28. यस, 28 स्टेट का जब तक परमिशन नहीं आता है, अप्रूवल नहीं आता है, तब तक ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करना बस की बात नहीं है। ये कब पता, ये जब मोदी जी को पता चल गया तब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस गवर्नमेंट को कन्विंस किया। कांग्रेस गवर्नमेंट को कन्विंस किया। जितने भी स्टेट थे, हर एक का जब तक मुझे परमिशन नहीं आता है तब तक उसी स्टेट में जीएसटी पब्लिश करना या जीएसटी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं। इसलिए क्या किया, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ भी, कांग्रेस का हायर अथॉरिटी के साथ फिर डिस्कशन हो गया। कुछ डिस्कशन होने के बाद उन्होंने परमिशन दे दी विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द कंडीशंस। एंड जब हम लोगों को सारे सारे स्टेट का जब परमिशन मिलेगा तभी जाके हम लोग ये एक्ट बना सकते हैं। तो आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट, Assam was the first state who gave the permission, who gave the approval for this GST. And Pashchim Bengal was the last state. Sorry, पश्चिम बंगाल नहीं है, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं है, ये जयललिता का स्टेट कौन सा था? जयललिता कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी? Sir, Tamil Nadu. यस, तमिलनाडु वाज द लास्ट स्टेट। तमिलनाडु ने सबके बाद में, यानी जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया बाकी स्टेट में, तब उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु ने परमिशन दे दी। तो तमिलनाडु, जयललिता वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस, जयललिता वाज टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस जीएसटी। इसलिए तमिलनाडु स्टेट ने, जब तक सारे स्टेट ने, यानी 28 स्टेट ने भी परमिशन दे दी, अप्रूवल दे दिया, उसके बाद जो हमारे क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी, दीव दमन, जम्मू कश्मीर, ये सब लोगों ने परमिशन, हर एक स्टेट ने परमिशन देने के बाद तमिलनाडु ने परमिशन दे दी, बिकॉज दैट कांग्रेस दैट गवर्नमेंट, जयललिता गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर जीएसटी। तो हम लोगों ने क्या किया, सो दीज आर द वेरियस हिस्ट्री, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। तो फाइनली 2000 में हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, और वो एक्चुअल इनफोर्स में आने के लिए 2017 आया। So 17 years we were working on this GST. Okay, so to manage this GST, we have implemented GSTN, that is called as a GST network बोलते हैं।
With GST network, it is kind of software which is prepared by the Infosys company, and for preparing this software, they have charged 1,400 crore rupees. Getting this? Now, अभी देखिए, तो ये है GST का हिस्सा. अभी व्हाट इज द GST? अभी देखिए, पहले हम लोगों ने डिस्कशन ये किया कि पहले कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि वहां पे ज्यादा में इंडस्ट्री जाती थी. फॉर एग्जांपल गुजरात, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र. उसमें लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन वो वेर कमिंग एंड दे वर स्टार्टिंग द बिजनेस. क्योंकि जो स्टेट के जो टैक्सेस थे ना, सेंट्रल का टैक्स तो किसी को भी देना है, देयर इज नो एक्सक्यूज. बट जो स्टेट के जो टैक्सेस थे ना, तो देयर वाज लिटिल बिट डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट टैक्सेस. इसलिए क्या था कि ये जो मैन्युफैक्चरर वेर प्रेफरिंग द सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टेट्स. इसलिए इकोनॉमिक इनबैलेंस था. इकोनॉमिक इनबैलेंस यानी कुछ इंडस्ट्री गुजरात में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसे पश्चिम बंगाल में कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, या अदर स्टेट में कम क्यों है? बिकॉज रेट ड्यू टू द टैक्स सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो इसके लिए क्या था, वहां पे इकोनॉमिक इम्बैलेंस था. कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे से चल रही थी, और कुछ ऐसी थी कि उसमें इंडस्ट्री नहीं जाने को तैयार नहीं. गेटिंग दिस? तो ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस रिमूव करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी लाया. तो जीएसटी लाने के बाद क्या हो गया? नाउ no single state has authority to charge any kind of duty on the industries or on the any kind of services. अब इस जो पहले अर्लियर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया था किसको, हर एक स्टेट्स को कितना टैक्स रेट चार्ज करना, वो जो राइट दिया था वो हम लोगों ने क्या किया है, रिमूव कर दिया. नाउ central government will decide the rate of tax, and whatever tax rates decided by the central government, all these states has a mandatory to follow this. And rates of taxes are only five. पहला है 0%, तो उसको as good as नहीं है, ऐसा ही है. 5%, 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. कितने हो गए? 0% छोड़ दो, वो तो एकदम से नहीं बोलेंगे. 5, 12, 18 and 28. कितने टैक्सेस है? 4 slabs. With the help of GST, we have prepared only 4 slabs: 5%, 12%, 18% and 28%. Again, rate of taxes depends upon the product, availability of product and nature of that kind of product. अभी देखिए जीएसटी और अर्लियर टैक्स सिस्टम में और जीएसटी में फर्क क्या है. ओके, नाउ सी, जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स or services as against the present concept of on the basis of manufacturing of goods. तो प्रेजेंट जो टैक्स सिस्टम था उसमें क्या था, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ऑब्जेक्टिव. Manufacturing related means what? For example, I am producing goods in the Gujarat. At that time, I have to pay excise duty. I have to pay excise duty, that is the central excise duty that was going towards the central government, and some tax that was going towards the state government of Gujarat. Getting this? So central excise duty I was paying, that is the I have to pay 2 taxes. पहला टैक्स तो मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग जितना भी मैं उसी स्टेट में उसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स जितना भी मैन्युफैक्चर करूंगा उसके हिसाब से मुझे मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी भरना पड़ता था. उसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी. एंड दैट एक्साइज ड्यूटी वाज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मैं आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. तो जब मैं मार्केट में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा, एट दैट टाइम आई हैव टू पे सेल्स टैक्स, एंड दैट सेल्स टैक्स वाज कलेक्टेड बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर इंटर स्टेट सेल रहेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहेगा, दैट टाइम दैट वाज गोइंग अगेन टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल, we are just discussing about the earlier tax system before entry of GST. ये tax system कैसा चलता था? तो पहले
अगर मैन्युफैक्चरर हैज टू पे मल्टीपल ऑफ टैक्सेस, तो पहला टैक्स था एक्साइज ड्यूटी, दैट वाज गोइंग टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, अगर गुजरात में मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और गुजरात में मैंने फिनिश गुड्स बनाया, तो एट दैट टाइम आई हैव टू पे वैट, दैट इज द सेल्स टैक्स टू द गुजरात गवर्नमेंट। तो गुजरात स्टेट को वैट जाता था। गेटिंग दिस? अभी नाउ अगर गुजरात में कुछ माल मेरा महाराष्ट्र में आता था, एट दैट टाइम आई हैव टू पे द सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अगर लोकल स्टेट में, अगर उसी स्टेट में जिस स्टेट में मैंने माल बनाया, उसी स्टेट में अगर मैंने इस माल सेल आउट किया, तो वहां पे उसी स्टेट को टैक्स जाता। गेटिंग दिस? मींस व्हाट, गुजरात गवर्नमेंट वाज कलेक्टिंग दैट वैट। अगर गुजरात से माल मान लो मुंबई आ रहा, तो मींस व्हाट, देयर इज द this is the interstate trade, this is the trade between two states, that is the Gujarat and Maharashtra. At that time there was that manufacturer or the person was selling, the person was paying central sales tax, and that was going directly towards the central government. This was the earlier taxes. Means what, the tax was on the basis of manufacturer based tax. अभी जीएसटी में क्या किया, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी क्या है कि जीएसटी वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड, सो इट विल बी रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन से कंट्री में, सॉरी, कौन से स्टेट में मेरा गुड्स जा रहा है, उसी स्टेट में मुझे टैक्स पेमेंट करना चाहिए। सो द पर्टिकुलर स्टेट will be held responsible to enjoy the benefit of taxes. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी जीएसटी वाला एग्जांपल देता हूं। मान लो आई हैव प्रोड्यूस्ड, अभी जीएसटी आ गया, तो अभी एक्साइज ड्यूटी तो पे करने की जरूरी नहीं है, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी इज रिमूव्ड बाय द जीएसटी। पहले क्या था, अगर मैं गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो गुजरात में मुझे गुजरात गवर्नमेंट क्या करता था, आई हैव टू पे मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी, दैट इज द एक्साइज ड्यूटी दैट वाज गोइंग टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स जाते थे, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस जाते थे। अभी जीएसटी आने के बाद क्या हुआ देखिए, आई एम प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन गुजरात, तो मेरा क्या हो गया, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में। गेटिंग दिस? और I will pay this, I will sell this product into the Maharashtra. महाराष्ट्र में मेरा गुड्स सेल हो रहा है, या मेरा महाराष्ट्र में गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहा है। अभी टैक्स कौन सा स्टेट कलेक्ट करेगा, यू टेल मी। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, एंड आई एम सेलिंग माय प्रोडक्ट इनटू द महाराष्ट्र, सो व्हिच स्टेट विल कलेक्ट द टैक्स, टेल मी। यस, आपको समझ रहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। हाँ, तो मेरा क्या क्वेश्चन है, कौन बताएगा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? अराउंड 13 12 स्टूडेंट्स आर देयर। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है आपको? सर हमारा गुड़ जो गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रहा है और महाराष्ट्र में बेच रहे हो, हाँ, तो टैक्स कौन सी स्टेट लेगी? टैक्स कौन से स्टेट लेगी, ये मेरा क्वेश्चन। तो कौन से स्टेट को ये टैक्स जाता है, देखिए ये इसमें द जीएसटी इज द डेस्टिनेशन ओरिएंटेड, द स्टेट इन विच सप्लाई इज देयर। जिस स्टेट में मेरा सप्लाई है उसको टैक्स मिलेगा। दो आई हैव मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, लेकिन गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा। दो आई हैव मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात, दो आई हैव यूटिलाइज्ड द सर्विसेज ऑफ गुजरात, but I am selling my product into the Maharashtra, so that Maharashtra government will collect the tax, that is called as a state tax, and Gujarat government cannot get anything. So this is the benefit. Earlier में क्या था, Gujarat government was collecting the tax. Getting this? But
Due to the entry of GST, the particular state in which the goods are moving. So which is the last destination of your product? आपके goods का last destination कौन सा है? Who is end consumer? आपका लास्ट का कंज्यूमर कौन से स्टेट में रहता है, उसी स्टेट को आपको टैक्स पेमेंट करना कंपल्सरी। आपका कंज्यूमर कौन से स्टेट के से बिलोंग है, उसी स्टेट में आपको टैक्स पेमेंट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। कौन से स्टेट को कंजम्पशन हो रहा है, उसी स्टेट का गवर्नमेंट आपसे एसजीएसटी लेगा। गेटिंग दिस? सो इट इज कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। So GST would be based on the principle of destination based। समझ में आ गया? डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोलते हैं उसको, या सप्लाई बेस्ड क्यों बोलते हैं? यस स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, Yes, sir. सो ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। अर्लियर जो टैक्स था हमारा वो ओरिजिन बेस्ड था। ओरिजिन यानी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया, उसी स्टेट को उसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन ओरिजिन बेस से हम लोगों ने ट्रांसफर डेस्टिनेशन बेस पे किया। तो डेस्टिनेशन बेस पे क्या है, मेरा एंड यूजर, मेरा कस्टमर कौन से स्टेट का है, उसी स्टेट को जीएसटी का फायदा हो जाए। दो आई हैव मैन्युफैक्चर्ड इनटू अक्रॉस द कंट्री। कौन से भी कंट्री में, अभी कौन से भी स्टेट में बनाओ, कौन से भी स्टेट में बनाओ, लेकिन कहाँ पे माल आपका बिकता है ना, उसको उसका बेनिफिट हो जाए। दिस इज द advantage, or this is the feature of the GST. Now, here under this GST, you have to pay GST in dual GST. Dual GST means what? Whatever amount of tax you are paying, some part will directly go to the central government, and some part will go towards the state government. Okay, so dual GST with the center and state simultaneously levying it on common base. तो एज अ कंज्यूमर आई विल पे टैक्स ओनली वन टाइम। तो मुझे सेपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेपरेट टैक्स पेमेंट करना है और स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट पेमेंट करना है, ऐसा सिस्टम नहीं है जो इट वाज देयर इन अर्लियर टैक्स सिस्टम। पहले टैक्स सिस्टम में क्या था, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग टैक्स पेमेंट करना पड़ता था और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से टैक्स पेमेंट करना था। अभी क्या है, whenever you are paying tax, one time you have to pay the tax, and when you are paying tax, उसके डायरेक्टली दो हिस्से पड़ते हैं। एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो देयर इज नो नीड टू पे टू टाइम्स टैक्स बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर एक ही बार टैक्स पेमेंट करेगा, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा सेंट्रल के कस्टडी में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा स्टेट के कस्टडी में ऑटोमेटिकली जाएगा। There is no need to the consumer to pay 2 or 3 times tax। उसका रिटर्न पेमेंट करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटर्न अलग से फाइल करना है, स्टेट गवर्नमेंट का रिटर्न अलग से फाइल करना है। ये सिस्टम हम लोगों ने ब्रेक की, ये सिस्टम हम लोगों ने तोड़ दिया। एक ही बार टैक्स पेमेंट करना है, एक ही बार रिटर्न भरना है, और एक ही बार आपके रिटर्न के फॉर्म भरना है, और एक ही बार रिटर्न फाइल करना है। सिंगल टाइम यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी, and you can do this activity not manually. You have to do this activity through software, and GST is the one indirect tax for entire country. So this is the basic concept of GST. Okay, now understanding the GST, look at the diagram. I will explain you this diagram. Just look to this diagram, try to understand. Done with this diagram?
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, and let us just discuss on this diagram. First, I have considered two states. I have considered two states, state 1 and state 2. Let us say state 1 is the Maharashtra, state 2 is, for example, Gujarat, state 3, that is the union territory, is, for example, Delhi or Andaman or any territory. And after that, there is the foreign territory. Okay, so these are the various destinations. तो ये अलग अलग डेस्टिनेशन पे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, दैट वी हैव टू सी. अभी whenever you are going to pay the GST, that time you have to pay dual GST. dual यानी दो at a time दो जीएसटी के ट्रांजेक्शंस होते हैं. तो पहला होता है CGST, SGST, UTGST एंड IGST. CGST मीन्स व्हाट? सेंट्रल जीएसटी. SGST यानी स्टेट जीएसटी. UTGST यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी. एंड IGST इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जीएसटी. अभी ये हम लोग देखेंगे. देखिए, CGST is the charged or CGST will be collected by central government. SGST will be collected by the state government. UTGST will be collected by the union territories and IGST will be collected by the central government. Okay, that is called as a integrated GST. अभी देखिए, जितने भी टैक्स है, यानी CGST रहेगा, SGST रहेगा, UTGST रहेगा एंड IGST. So central government, just try to listen my words. Central government has passed 4 acts. एक तो जीएसटी पास किया, जीएसटी काउंसिल पास किया. जीएसटी एक्ट पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पास्ड 4 acts. First act is the CGST Act, then SGST Act, UTGST Act and IGST Act. ऐसे 4. एक तो जीएसटी पब्लिश हुआ, जीएसटी एक्ट तो एक सिंगल एक्ट है. Along with this GST Act, central government we have published 4 acts. First act is the CGST Act, second is the SGST Act, third is the UTGST Act and next is the IGST Act. ये 4 एक्ट हम लोगों ने पारित किए हैं या पब्लिश किए हैं या पास किए हैं. Now let us say state 1. तो हर एक कोई मैन्युफैक्चरर रहेगा, तो हर एक मैन्युफैक्चरर रहेगा, होलसेलर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर रहेगा, तो उसको 2 जीएसटी एक ही बार पेमेंट करना है, लेकिन उसके 2 हिस्से होते हैं. एक हिस्सा जो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो हिस्सा जाता है उसको बोलते हैं CGST एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जो हिस्सा जाता है उसको बोलते हैं SGST. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेट 1. स्टेट 1 इज द महाराष्ट्र स्टेट. ओके, if the manufacturer and the consumer both belongs to one particular state, दोनों भी महाराष्ट्र से है, at that time you have to pay GST. तो जीएसटी में एक हिस्सा सेंट्रल के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र के पास. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पेइंग 18% as a GST. Out of this 18%, 9% will go towards the central government and remaining 9% will go towards the state government. Clear about this? CGST, SGST proportion? Yes or no? Just tell me fast. Yes, sir. तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी रिटेलर या कोई भी कंज्यूमर कभी टैक्स, जीएसटी का टैक्स पेमेंट करेगा तो उसके 2 हिस्से बनते हैं. एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दूसरा हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास. गेटिंग दिस? अगर दोनों भी आदमी यानी मैन्युफैक्चरर एज वेल एज कंज्यूमर बिलोंग्स टू सेम स्टेट, अगर ये दोनों भी एक ही स्टेट से है, महाराष्ट्र से मुंबई से माल नागपुर जा रहा है, मैन्युफैक्चरर इज फ्रॉम मुंबई and seller or the consumer is from Nagpur, means both the parties are from the belongs to same state. At that time yes GST is applicable. तो yes GST applicable है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक हिस्सा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक हिस्सा जाएगा. अभी देखिए, अभी I have one company in Maharashtra and I have demand in the Gujarat.
अभी क्या हो रहा है, गुजरात में मेरा माल जा रहा है, सो आई एम सेंडिंग माय मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम मुंबई टू सूरत. At that time, there is the interstate transaction. This is not intrastate transaction. Intrastate यानी within the state. Interstate यानी outside of your state. At that time, directly you are paying GST in the form of IGST. That is called as integrated tax or integrated GST. तो जो कुछ टैक्स हम लोग पे करेंगे, that will be in the form of IGST. तो वो आईजीएसटी टैक्स किसके पास जाएगा? फर्स्ट, दिस एंटायर टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वंस द टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 18% जो टैक्स जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पे से 9% फिर किसको देगा? गुजरात गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि मेरा माल गुजरात महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है. तो बीइंग महाराष्ट्र, मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया? महाराष्ट्र में किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा माल महाराष्ट्र में बिका नहीं. मेरा माल कहाँ पे सेल हुआ है? गुजरात में हुआ. तो गुजरात गवर्नमेंट विल कलेक्ट द बेनिफिट ऑफ दिस एसजीएस. तो जो गुजरात गवर्नमेंट को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? आधा हिस्सा गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. मैन्युफैक्चरर का बिजनेस महाराष्ट्र में है, मुंबई में है. मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र में करेगा, फैसिलिटीज महाराष्ट्र के यूटिलाइज करेगा, और माल कहाँ पे बेचेगा? गुजरात में. तो सर्विस किसने प्रोवाइड की? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. और टैक्स कौन ले रहा है? गुजरात गवर्नमेंट ले रहा है. सो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द फीचर ऑफ दिस इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज द फीचर ऑफ दिस जीएसटी. दिस इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. मेरा एंड यूजर कहाँ का है? उसी स्टेट को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. ओके. अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा, एट दैट टाइम आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल. क्लियर अबाउट दिस? बोलो जल्दी. यस सर. तो अगर गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात स्टेट में फॉर एग्जांपल सूरत में माल मैन्युफैक्चर हुआ और वडोदरा में कस्टमर को बेचा, तो सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी इज एप्लीकेबल. तो उसी टाइम पे क्या होगा? मेरा मैन्युफैक्चरर भी उधर का है और मेरा सेलर भी यानी कंज्यूमर भी उधर का है, तो गुजरात गवर्नमेंट को उसका आधा हिस्सा मिलेगा. नेक्स्ट है, अगर मेरा माल गुजरात से यूनियन टेरिटरी जा रहा है, मीन्स दिल्ली में मेरा कस्टमर है, या अंडमान निकोबार में जा रहा है, या पौंडीचेरी में जा रहा है, या जम्मू कश्मीर में जा रहा है. अगर यूनियन टेरिटरी में मेरा प्रोडक्ट्स जाता है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? अगेन I have to pay IGST, because Union Territory will be considered as a one separate state. So though this is Union Territory, IGST will be applicable. So Union Territory is the one of the form of state. वो state ही consider गया, state ही consider किया उसको. Though this is the Union Territory, but this will be considered for tax purpose. This will be considered as a state. So there is the transaction between two states. At that time, you have to pay IGST. तो IGST आपको पेमेंट करना है. So अगर IGST मैंने 18% पेमेंट किया, तो 18% में से 9% किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. यानी 18% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा. 18% में से 9% आधा हिस्सा उसके खुद के पास रहेगा, और आधा हिस्सा उसी यूनियन टेरिटरी को ट्रांसफर करेगा सेंट्रल को. गेटिंग दिस? अगेन, अभी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली या पौंडीचेरी, तो अबे अगर यूनियन टेरिटरी में मैन्युफैक्चर भी उधर ही हो रहा है और कंज्यूमर भी उसी पर्टिकुलर टेरिटरी से है, एट दैट टाइम अगेन CGST is applicable as well as UTGST is applicable. तो लोकल का जो टैक्स है that will be called as a UTGST. So that UTGST directly goes to the GST account. So So in this case, what will happen? यूनियन टेरिटरी में मैन्युफैक्चरर भी यूनियन टेरिटरी का है, और यूनियन टेरिटरी में उसी स्टेट में उसी यूनियन टेरिटरी में कंज्यूमर भी है, तब जाके ड्यूअल फॉर्म ऑफ टैक्सेस में रहेगा. एक तो सीजीएसटी बाय डिफॉल्ट रहेगा,
CGST is the contribution of, this is the contribution goes to the central government, and UTGST is the tax which is collected by that particular union territories by the name of UTGST. Getting this? उसके बाद अगर UTGST से माल अदर कंट्री में जा रहा है, UTGST से माल अदर फॉरेन टेरिटरी में जा रहा है, तो at that time again foreign territory will be considered as another state for this GST purpose, and where IGST will be applicable. Clear about this? GST credit? Yes? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके हिसाब से उसका क्रेडिट एंजॉय होगा, उसके हिसाब से जो जीएसटी क्रेडिट है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग देखेंगे। तो इसके हिसाब से डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है, सप्लाई ओरिएंटेड टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड जीएसटी टैक्स नहीं है, ये डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है या सप्लाई ओरिएंटेड टैक्स। तो उसके हिसाब से जो स्टेट उसका बेनिफिट लेगा, वो स्टेट क्या करेगा, उसका क्रेडिट भी लेगा, उसी स्टेट से हमको क्रेडिट भी मिलेगा, जीएसटी का क्रेडिट बोलते हैं। So to the next lecture, we will see the GST credits. So just tell me, are you getting or not? Are you understanding what I am teaching or not? Or do you facing any kind of problem? You just tell me. मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग होता है या नहीं होता है? Just tell me. Yes, होता sir. है सर। होता है. But you people are not asking any of the question. Being a finance student, you should have lots of queries. So you are not asking any kind of question. You are not giving me reply as well. You are just in sleeping mode type. तो ये नहीं चलेगा, because this is the technical subject. ये technical subject है. जब तक आप क्वेश्चन मुझे नहीं पूछोगे, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आएगा. Getting this? So you should have to ask me some of the questions so that I can understand whether you are getting or not. In case of any changes, in case of any modifications, अगर आपको कुछ चाहिए तो you can tell me. अभी क्या हुआ, 2 हफ्ते का गैप पड़ा है हमारे ये सेशन में, तो अगर गैप हो गया तो हम लोग प्रीवियस वाला भूल जाते हैं. Okay, so we should have continuous lecture so that we will take some of the speed. ठीक है, अभी 2 हफ्ते के गैप के बाद हम लोगों ने ये सेशन लिया, इसलिए हमारा थोड़ा सा स्पीड कम था और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने थोड़ा टाइम रखा. तो टाइम बीइंग इतना ही ध्यान रखो कि जीएसटी के 4 एक्ट पास हुए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी. Without passing a act, any government, that is central government or any state government, cannot take any kind of charge. इसलिए पहले हम लोगों ने टैक्स पारित की, जीएसटी एक्ट पारित किए हैं, उसके बाद ही हम लोग ये जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर and hope you are understanding whatever I'm just telling to you. Okay, so let us stop here. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, bye.